So if F is disk, open unit disk, such that it sends 0 to 0. That is, 0 is a fixed point of this holomorphic function, right? Then, so only in hypothesis you require that it should be holomorphic in open unit disk, and it sends origin to origin. Then this modulus of fz is less than equal to modulus of z. And for all z in disk, for all z in the disk, if you call this set as D2, the collection of all z satisfying this condition. So for all z in D2, this modulus of fz is always less than equal to modulus of z. And also this modulus of its derivative, modulus of derivative at origin is less than equal to 1. And if at any other point this equality hold, so if this equality hold at any other point, so you see in this inequality, this equality hold at 0, because f0 is equal to, from here f0 is equal to 0, so modulus of f0 is equal to 0. So modulus of f0 from here is 0. So equality holds at 0. If equality hold at any other point in the disk, मान लीजिए कि कोई एक दूसरा point ले लीजिए और यहाँ पे modulus of fz is equal to modulus of z हो गया, and if, so this is the second part of the lemma, that if equality holds at any other point, than 0, 0 के अलावा किसी एक पॉइंट पे अगर मॉडुलस ऑफ fz is equal to मॉडुलस ऑफ z हो गया, then this fz is nothing but z times e to the power I alpha, or alpha belongs to 0 to 2 pi, right? That is, then this function is nothing but, geometrically you can say that if equality hold at any other point, then this function is nothing but a rotation about origin through angle alpha. So this is a rotation about origin through angle alpha. So if f is holomorphic, so you can see, so f is a map from this open unit disk to complex plane, say C, maybe you can write the complex plane image set here. So this is your C. Then he says, so this is your D2, and f is a map from here to here. This is a map. Then he says that modulus of fz is always less than equal to modulus of z. So if modulus of z is less than equal to 1, so if you are talking about this unit disk, then its image cannot go beyond this disk. So it's always a map from open unit disk to open unit disk. So whenever it is a holomorphic map and f0 is equal to 0, अगर holomorphic map है और 0 को 0 पे भेज रहा है, तो मॉडुलस ऑफ fz जो है वो मॉडुलस ऑफ z से हमेशा छोटा होगा. यानी अगर ये mod z लेस देन 1 है तो इसका इमेज कभी भी इस यूनिट डिस्क के बाहर नहीं जाएगा. So this is a very interesting result, that the image of any point here, if it is holomorphic, just holomorphic function sending 0 to 0, अगर 0 को 0 पे भेज रहा है तो ये modulus of fz जो है, this cannot go outside this disk. And secondly, अगर इस 0 को तो 0 पे भेज रहा है, इसके अलावा किसी एक पॉइंट, मान लीजिए कि कोई पॉइंट आपका z1 है, ये z1 एक पॉइंट यहाँ है और ये fz1 है, मान लीजिए, अगर fz1 की ओरिजिन से दूरी और z1 की ओरिजिन से दूरी अगर ये इक्वल हो गया किसी भी एक पॉइंट के लिए अदर देन ओरिजिन, then this map is nothing but a rotation by some angle alpha. So this is very interesting result, what is called Schwarz lemma, and it's very much applicable in this theory of complex analysis, and maybe more generally in higher, you can say,
analysis and geometry also. So proof. So is it okay to everybody? Statement is clear? Yes. ठीक है ना? So since F is holomorphic, in this disk, F is holomorphic in this open unit disk, तो आप इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर सकते हैं एंड यू कैन राइट दिस एफ जेड एज दिस a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर. आप z के इंक्रीजिंग पावर्स में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. बट यू नो दिस f0 is equal to 0, it is given, so therefore a0 must be 0. a0 must be 0. So for z not equal to 0, you can divide this equation by z. अगर इसको z से डिवाइड करके और एक दूसरा फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, so let g be a function gz which is equal to fz upon z. This is equal to fz upon z, that is a1 plus a2z plus a3z square. So this is also an analytic function, holomorphic function, infinite series function, right? So gz is also analytic function, plus order and so on, right? So this is defined when this modulus of z is less than 1 but greater than 0. At 0 this is not defined, because you see this denominator will be 0, so this is not defined, right? And suppose at z is equal to 0, its value is simply f dash 0, right? So I mean f dash 0 is just a1. You see, if you differentiate here, f dash z is simply a1. So at z is equal to 0, its value is simply a1, and otherwise this is fz upon z, right? So you see this clearly, this G is also holomorphic in unit disk, right? So this G is also holomorphic. So clearly G is holomorphic in this mod Z less than 1. Mod Z less than 1, this is holomorphic. And in particular, if because you see, for any z not equal to 0, it is just this infinite series. An infinite series is holomorphic in its radius of convergence. And within the, you can say, circle of convergence. And at z equal to 0, if you have any confusion, you see it's just f dash 0. So the function is differentiable at 0. And it's, you see here, what is its derivative? What is yes, this its value at z equal to 0 is this f dash 0, right? Okay, and you can see this g is also differentiable at 0. G is differentiable at 0. You can check that this gz minus g0 upon z, this will be a differentiable function. Okay. Now suppose R is a real number which is just less than 1. I'm talking about this circle which is centered at origin and radius R. So it should be in fact in domain, not in the range. So suppose R is the radius of this a circle centered at origin and radius R, and this R is less than 1. So let us take this R is a real number which is less than 1 and greater than 0. Right.
So what can you say about this modulus of GZ? What can you say about, maybe here you can write, what can you say about this modulus of GZ? So modulus of GZ, which is equal to modulus of Fz upon Z, right? Modulus of Fz upon Z. And because modulus of Fz is less than equal to 1, right? And along this circle, जो सर्कल आपका है r रेडियस का, इस पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो उसका मॉड हो जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू r, right? So this will be strictly less than 1 upon r. Is it okay? Is it okay to everybody? This modulus of GZ is less than 1 upon r. ये g एक फंक्शन है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, और एक ये आपने सर्कल लिया जिसका रेडियस r है, और उस सर्किल के अलोंग इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1 अपॉन r. उस सर्किल के अलोंग, सर्किल पे कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो उसकी वैल्यू है 1 अपॉन r. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है ना? यस सर. ये जीजेड फंक्शन है, जीजेड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज जीजेड इज इक्वल टू जस्ट एफजेड अपॉन जेड. ठीक है ना? जब जेड 0 के इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू एफजेड अपॉन जेड है. 0 को हटा दीजिए, इसीलिए हम सर्किल के अलोंग बात कर रहे हैं. तो ये मॉड जेड की एग्जैक्ट वैल्यू है r, सर्किल के अलोंग मॉड जेड इज इक्वल टू r, एंड मॉडुलस ऑफ एफजेड इज, आई थिंक, सॉरी, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू. So maybe you can write less than equal to, sorry, less than equal to 1. So therefore this gz is, modulus of gz is less than equal to 1 upon r. लेकिन मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम ये कहता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बाउंड्री पे ही होगी. कोई भी अगर आप कॉम्पैक्ट सेट ले लीजिए जहां फंक्शन होलोमॉर्फिक है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे ही होगी कहीं ना कहीं. इसका मतलब ये केवल सर्किल के अलोंग ही नहीं बल्कि इस पूरे डिस्क में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 अपॉन r. ये जो जीजेड फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस केवल सर्किल के अलोंग नहीं बल्कि इस पूरे डिस्क में मैक्सिमम वैल्यू है 1 अपॉन r. इज इट क्लियर? दिस मॉडुलस ऑफ gz is not only less than equal to 1 upon r along the circle, but it's also less than equal to 1 upon r in the whole disk. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. we approach this Hello, sir. r tending to 1. Yes. Do you have any problem? कोई ज्वाइन होना चाहता है? Oh, sorry. No. Yes. So you see here, this modulus of gz is not only less than equal to 1 upon r along the circle, but this maximum modulus theorem says that because its maximum value always lie on the boundary somewhere, the maximum value of modulus of gz is less than equal to 1 upon r in the whole disk. In the whole disk. अब जैसे जैसे आप r को 1 की तरफ लेके चले जाइए, r approaching 1, then what will happen? So suppose letting r tending to 1, when r approaching 1, this right hand side approaching 1, because जैसे r 1 की तरफ जाएगा तो right hand side 1 को approach करेगा. So in that case this modulus of gz will be less than equal to 1. And what it means? So gz is less than equal to 1. It means
थिंक देयर इज कुछ ऐसी चीज तो हमने नहीं एज्यूम किया है ना. नहीं, एक एज्यूम्पशन इसमें हमसे मिस हो गया है, एंड दैट एज्यूम्पशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. दैट एज्यूम्पशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. दिस एफ इज होलोमार्फिक. हमने हमने इस कंडीशन का यूज कर लिया है यहाँ पे, एंड दैट इज रॉन्ग. ये हमको यूज नहीं करना है, बिकॉज एफ इज होलोमार्फिक इन ओपन यूनिट डिस्क. एफ इज होलोमार्फिक इन ओपन यूनिट डिस्क satisfying, या तो ऐसे लिखे कि f is a map, holomorphic map from open unit disk into itself. या तो ये कहिए कि f is holomorphic map from open unit disk to itself, या ऐसे लिखे कि f is holomorphic in open unit disk satisfying the two condition. पहला कंडीशन है कि f0 is equal to 0, and second condition is that this modulus of z is less than equal to 1. This is less than equal to 1. This condition is required. ये नहीं अगर एज्यूम करेंगे तो ये तो कंक्लूजन का पार्ट है. सॉरी, हमने इसको यूज कर लिया था यहाँ पे. दिस इज द पार्ट ऑफ द कंक्लूजन. सो दिस एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 हम यहाँ से कहेंगे. सॉरी सॉरी सॉरी, हमने इसको यूज कर लिया था यहाँ पे. दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कंक्लूजन. सो इफ एफ इज होलोमॉर्फिक इन ओपन यूनिट डिस्क satisfying this first condition, f0 is equal to 0, and this is actually this in general it can go outside. But if this is the assumption that f is a map from open unit disk to open unit disk, this should be in the hypothesis कि open unit disk से open unit disk में अगर map है such that अगर f0 is equal to 0 हो तो modulus of fz is always less than equal to modulus of z, and its derivative at 0 less than equal to 1. And the second conclusion is that if at any point other than 0, if the equality holds, then it is just a rotation. So you see here, so this modulus of gz, which was modulus of fz upon z, but modulus of fz less than equal to 1 and modulus of z is equal to r. So this modulus of gz is less than equal to 1 upon r along the circle. But the maximum modulus theorem says that its maximum always lies in the boundary. So therefore, it's not only along the circle, but in the whole disk, this gz less than equal to 1 upon r. Now letting r tending to 1, this modulus of gz is less than equal to 1, right? But if you put here the value of gz, modulus of gz less than equal to 1, it means modulus of fz less than equal to z. So this implies that this modulus of fz is less than equal to z for every z in the disk. Right? So this is the first part. Is it okay to everybody? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने ये प्रूव किया कि मॉडुलस ऑफ gz लेस देन इक्वल टू 1 and modulus of gz is nothing but fz upon z. If z lies mod z lies between 0 and 1, and for z is equal to 0, this is equal to f dash 0. So modulus of gz is simply mod fz upon modulus of z, and modulus of fz upon modulus of z less than equal to 1 means modulus of fz is less than equal to modulus of z. And together with what is your g0? This g0 is nothing but f dash 0, and this f dash 0, because this g0 is less than equal to 1, this modulus of g0, if you think of this modulus of g0, that is equal to modulus of f dash 0, and this will also be less than equal to 1. Right? Is it okay? यस सर. सर हाँ सर बहुत सारे लोग ज्वाइन होना चाहते हैं.
Okay. Yeah. Okay. Now, the next part, that if modulus of fz is equal to modulus of z at any other point than origin. अगर एक पॉइंट पे तो जीरो पे तो है ही है, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. कह रहे हैं कि अगर किसी एक इफ इक्वालिटी होल एट एनी अदर पॉइंट देन जीरो, देन इट इज जस्ट ए रोटेशन, राइट? तो यू सी हियर, इफ इक्वालिटी होल्ड एट एनी अदर पॉइंट देन ओरिजिन, मान लीजिए कि एक जीरो के अलावा एक पॉइंट है जेड जीरो, लेट अस ट्राई टू शो हियर. मान लीजिए कि एक कोई जेड जीरो पॉइंट है जो जीरो के अलावा है, अदर देन जीरो, such that this fz, modulus of fz is equal to modulus of z, right? So what about this modulus of gz? So modulus of gz, maybe you can take this z0, z0. So what about this gz0? gz0, which is equal to fz upon z, so this must be equal to 1. Right? So if z0 is a point, मानिए z0 कोई ऐसा पॉइंट है जो इस डिस्क के इंटीरियर में है, और यहाँ पे इस g फंक्शन की वैल्यू हो गई 1, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि g की फंक्शन की वैल्यू इस पूरे डिस्क में 1 से लेस होना चाहिए. मॉडुलस ऑफ gz शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 इन द होल डिस्क, और आपको एक इंटीरियर पॉइंट ऐसा मिल गया जहां इसकी वैल्यू है 1, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंटीरियर पॉइंट पे मिल गया, जबकि आप यहाँ कह रहे थे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम ही होना है, लेस देन इक्वल टू 1 होना है, और 1 जो कि बाउंड्री पे लाई कर, जो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम के अनुसार वो बाउंड्री पे लाई करना चाहिए, और यहाँ पे एक इंटीरियर पॉइंट आपको z0 मिल गया जहां उसकी वैल्यू है 1. व्हाट इट मींस? fz is sorry, this modulus of gz is constant. Is it a constant function? So therefore this modulus of gz not only at z0 but modulus of gz is equal to 1, and modulus of gz is equal to 1, it means modulus of fz is equal to modulus of z, and this means this fz is equal to z e to the power I theta or I alpha for alpha lying between 0 to 2 pi. Is it clear? Yes sir. तो इस तरह से आपने देखा कि अगर f एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है जो यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क में है, यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क में होलोमॉर्फिक फंक्शन है जिसके लिए ओरिजिन एक फिक्स्ड पॉइंट है, ओरिजिन एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो आपने देखा, और साथ साथ ये कंडीशन तो आ गया कि अगर यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क अगर आप कह दिए तो ये कंडीशन उसी में आ गया, यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क एक मैप है such that 0 is a fixed point, then modulus of fz is less than equal to modulus of z for any z in D2. मतलब वो कोई भी दूसरा पॉइंट, अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट इस ओरिजिन के अलावा अगर आप लेते हैं तो इसकी जो दूरी है ओरिजिन से, fz से इसकी दूरी इसको इसके आगे नहीं जा सकती. इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z. So it's always, you can say, in some way you can say it's contracting always contracting, right? अगर आप mod z, आप कोई रेडियस r ले लीजिए, जब mod z लेस देन इक्वल टू r है तो मॉडुलस ऑफ fz जो है वो भी लेस देन इक्वल टू r रहेगा, वो r के बाहर नहीं जाएगा, राइट? एंड टुगेदर विद दिस डेरिवेटिव एट 0 लेस देन इक्वल टू 1, एंड इफ दिस इक्वालिटी होल्ड एट एनी अदर पॉइंट देन 0, इसके अलावा एक पॉइंट पे भी अगर इक्वालिटी हो गया, सो दिस इज जस्ट ए रोटेशन मैप. केवल एक डिस्क ले लीजिए और उसको रोटेट कर दिए, जस्ट काइंड ऑफ रोटेशन. सो यस, इसमें एक दो इसकी
एक्सरसाइजेज हैं, मैं उसको लिख दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे. सो द वन एक्सरसाइज इज, if F is a holomorphic map of open unit disk to itself, so this exercise 1, if F is a holomorphic map of unit disk to itself, F is a map from D2 to D2, then show that this F dash W, modulus of F dash W is equal to 1 minus FW square and divided by 1 minus mod W square. So this is in fact less than equal to, is less than equal to this. And for all, this is true for all W in disk, for all W in disk. Uh, Similarly, if F is a holomorphic map from half plane to open unit disk, suppose you call this half plane as the collection of all Z such that this real part of Z is positive. Suppose we call this as H2. Or maybe instead of H2, you may call half right part. तो इसको आप HR कर दीजिए, half right part, HR2 कर दीजिए, right part. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और इसका राइट पार्ट, इसका रियल पार्ट पॉजिटिव. And suppose F is a map from this HR2 to D2. अपर हाफ प्लेन से डिस्क में एक मैप है, दिस इज योर D2. So F is a map from here to here. Then show that this F dash Z is less than equal to 1 minus mod Fz square and divided by 2 times real part of Z for all Z in this upper half plane, right half plane, right half plane. Okay, so with these couple of exercises, I can stop this Schwartz lemma. And now I am coming to the last part of your syllabus to discuss the singularities of a holomorphic function. So the next part is the singularities. Singularity of a holomorphic function. So a singularity of a function means the function is not differentiable at that particular point. A point Z is equal to A is said to be a singular point if F is not differentiable or F is not holomorphic at the point Z is equal to A. More precisely, F is not holomorphic at Z is equal to A, right? So for example, you can think of this Fz is equal to 1 upon Z is not differentiable at Z is equal to 0. 1 upon Z minus 1 not differentiable at Z is equal to 1, and so on. Now, there are some different kind of singularities. One important kind of singularity is
called isolated singularity. जैसे हमने zeros को बताया था isolated है, वैसे ही singularities, isolated singularities. So isolated singularity means if a singularity z is equal to a is said to be isolated if in some neighborhood of the point z is equal to a, z is equal to a is the only singularity in this neighborhood, right? So z is equal to a is said to be isolated singularity if there is a small neighborhood or there is a small ball centered at the point a which contains exactly one singularity, z is equal to a. No other singularity than z is equal to a is contained in this ball. If this is so, then we say that it's isolated singularity. So maybe you think of a singularity which is not isolated. So maybe you give an example. So this is a simple exercise to just to think of. So give an example of a singularity. So give an example on your own of a singularity which is not isolated, राइट, विच इज नॉट आइसोलेटेड. इसका मतलब कि उसका कितना भी छोटा आप एक नेबरहुड लीजिएगा उसमें जरूर कुछ और सिंगुलरिटीज आ जाएंगी, तो ऐसी सिंगुलरिटी फिर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं कही जाएगी, राइट. जैसे आपको हिंट मैं दे सकता हूं कि आप एक ऐसे सिंगुलरिटी के बारे में सोचें कि जिसमें जैसे आप कुछ ऐसी सिंगुलरिटी के बारे में आप सोचें कि मान लीजिए z इज इक्वल टू 1/n भी उसका सिंगुलरिटी हो और 0 भी सिंगुलरिटी हो, ठीक है. तो 0 का कोई भी नेबरहुड अगर आप लीजिएगा तो 1/n टाइप के एलिमेंट उसके नेबरहुड में आ जाएंगे. कितना भी छोटा आप नेबरहुड लीजिए तो 1/n टाइप के कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो देयरफॉर इट कंटेन्स मोर सिंगुलरिटी देन 0. So 0 is not the only singularity in some neighborhood. If you take any neighborhood of the point 0, however small you take, there are more singularity than 0, and therefore 0 is not the isolated singularity of. So you have to construct such a function for which this 0 and 1/n are singular points. Okay. Now let us think of the expansion of this function. So this 1/1 minus z, if you expand in this mod z less than 1, and this negative power of z minus z0 is called principal part of the Lorentz series expansion, right? Principal part of the Lorentz series expansion. And here the coefficient, just like in Taylor series expansion, you have written this an is equal to, so what was your an? This an is equal to 1/2 pi I, and this fz upon z minus z0 to the power n plus 1 dz along a circle centered at the point z0 and radius rho, where rho is greater than r and less than capital R. So this is so in this way you can get this Lorentz series expansion. So the coefficients an is equal to 1/2 pi I and fz upon z minus 0 to the power n plus 1 dz. Okay. So in this way, whenever you see, for example, you have this 1/z function. So 1/z is not holomorphic in this disk mod z less than 1,
But if you take any, if you just remove this origin, and you take this ring shaped region with this inner circle radius small r, where r is as small as you want, and this outer radius maybe 1. So in this ring shaped region, this function is holomorphic. And you can find this Lorentz series expansion in powers of z. And in fact, it has, because it is already written as 1 upon z, so just one term is here. There is no regular part of the expansion. You have only one term in the principal part, that is 1 upon z. You can also like fz 1 upon say z minus 1, and you can expand in various reasons. So maybe you can expand few functions in its valid reasons. So you can expand this fz is equal to 1 upon z minus 1 and z minus 2 in the valid region. So expand this series in the valid region. And this is also interesting that whatever infinite series you have which is valid in that region, that is your Lorentz series expansion. आप एक वैलिड इसका एक्सपेंशन लिखें जो उस रीजन में वैलिड हो, तो डेफिनेटली वो आपका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन होगा. नाउ विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन. लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में आप देखेंगे कि पॉजिटिव पावर्स आपके हैं, नेगेटिव पावर्स हैं. नेगेटिव पावर्स को हम प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन कह रहे हैं और पॉजिटिव पार्ट को हम रेगुलर पार्ट कह रहे हैं. तो अगर हमारे पास जो एक्सपेंशन है, if it has no negative terms, if it has no negative powers of z minus z0. आपने जो एक्सपेंशन लिखा है, if this expansion has no negative powers of z minus z0, just like say if your function fz is some polynomial function, maybe z minus 1, z minus 2, इस polynomial function को आप expand करिए, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको जैसे मान लीजिए अगर आप z की पावर्स में लिखना चाहते हैं तो you can expand in powers of z and you have only positive powers of z. There is no negative powers of z, right? So if you have no negative powers of z, then your function is holomorphic. It's completely holomorphic. Now, there are two cases. The first case is that there are only finite many terms in principal part, and the second case, there are infinite many terms in the principal part. So if there are only finite many parts, finite part in the Lorentz series expansion, then say only m terms are here. So let us come on the next slide. Maybe suppose you expand in powers of z minus z0 and you have say some positive part, maybe right here, a0 plus a1 z minus z0 plus a2 z minus z0 square plus dot dot. And suppose in negative part you have only finite many terms, z minus z0, a2 z minus z0 square, and say am z minus z0 to the power m. So you can write, maybe it's better to write suffix a minus 1, a minus 2, a minus m, right? So the principal part has only m terms. Then of course the z is equal to z0 is not a regular point, it's a singular point because the function is not differentiable at z is equal to z0. Although you can expand in powers of z minus z0, but the function is not analytic, is not holomorphic at the point z is equal to z0. So z is equal to z0 is a singular point, is in fact isolated singular point of the function. Now there are also classification of this isolated singularities. Isolated singularity. So the first kind is if your function has only finite many terms in the principal part, say m part, then you call the function has a pole of order m. Pole of order m. In particular, if it has only one term, you call it a simple pole. Simple pole.
If it has two terms, you call pole of order 2, and so on. And if it has infinite many terms in the negative powers, infinite many terms are there, then you say that z is equal to z0 is an essential singularity. Essential singularity. For example, you see here, if your fz is equal to say 1 upon z minus 1, z minus 2 whole square plus maybe just you write only two factors, z minus 1, z minus 2 whole square. So when you expand, you can see that if you expand in powers of z minus 1 at z is equal to 1, it has a pole of order 1. And if you expand in powers of z minus 2, it has a pole of order 2, right? So it has a simple pole of at z is equal to 1 and pole of order 2 at z is equal to 2. So this is a simple pole, this is simple pole, and this is pole of order 2, pole of order 2 at z is equal to 2. But if you consider a function, say fz is equal to e to the power 1 upon z, if you expand this, what will you get? 1 plus 1 upon z plus 1 upon z square plus 1 upon z cube plus dot and so on. So this is also the expansion of the function e to the power 1 upon z. So at z is equal to 0, you see its principal part contain infinite many terms, right? And so therefore, the z is equal to 0 for this function is not a kind of pole, is an essential singularity for this function, right? So is it clear? The difference between pole and essential singularity? Yes, sir. Okay. Now I'm coming to a definition. What is called residue at isolated singularity of the function, right? So the residue of a function. So now I'm defining what is called a residue at, first I'm defining at simple pole. सिंपल पोल अगर किसी फंक्शन का है जैसे 1 अपॉन जेड, राइट, 1 अपॉन जेड माइनस 1, इस टाइप के फंक्शंस हैं, तो उनको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वो नेगेटिव पावर्स में केवल एक ही टर्म आपको मिलेगा, ओनली दिस टर्म, बाकी जो लेफ्ट टर्म सभी जीरो हो जाएंगे. तो एट मोस्ट यू विल गेट ओनली वन टर्म हियर. सो द कोफिशिएंट ऑफ दिस a minus 1, the coefficient of in fact the coefficient a minus 1 of 1 upon z minus z0, this is called the residue of the function. जब भी आप इसको नेगेटिव पावर में एक्सपेंड करें तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ 1 upon z minus z0, that is a minus 1, so this is called the residue of the function at z is equal to 0. So let us expand in powers of z minus z0 at simple pole. So in the expansion, or you can write Lorentz series expansion of fz in powers of z minus z0, the coefficient of z minus z0 is called the residue of the function, is called the residue of the function fz at z is equal to z0, right? So there are some computational techniques. So
Suppose z is equal to z0 is a simple pole. If z is equal to z0 is a simple pole, then the residue of fz at z is equal to z0 is nothing but this z minus z0 times fz and limit z tending to z0. Right? So for example, suppose your function fz is one upon z minus 1, z minus 2, right? So if someone asks to expand this in power of z minus 1, अगर इसको z minus 1 की पावर में आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए तो कैसे एक्सपेंड करेंगे आप? So in fact this function has two singularities. At z is equal to 1, at z is equal to 2. Z is equal to 1 and z is equal to 2. तो z is equal to 1 के पावर में आप एक्सपेंड करेंगे, जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन आपको मिलेगा, तो ये z is equal to 2 पे पहुंचते पहुंचते आपको एक सिंगुलरिटी मिल जाएगा. At z is equal to 2 it has a singularity, at z is equal to 1 it has a singularity. So if you expand in power of z minus 1, what will you have? So this is equal to, first you, in fact, if you want by partial fraction, you can break. So you can write this something upon z minus 1 and something upon z minus 2, right? So maybe you can write here minus 1 sign, here write plus 1 sign. So you will get z minus 1 and plus z minus 2. So 2 z cancel out and 2 minus 1 is 1. So this is the partial fraction, breaking in the partial fraction. And now if you expand it, you will have here 1 upon 1 minus z, or maybe you write minus sign, so z minus 1. In denominator you will get z minus 1, z minus 1. बस 5 मिनट में अभी हम फ्री. And here you can write 1 upon z minus 1 minus 1, right? Z minus 1. You want to expand in the power of z minus 1. You want to expand in the power of, so maybe this is your 1 upon z minus 1, just one negative term. And here you can write, if you take minus common, you can write 1 minus z minus 1. 1 minus z minus 1. Is it okay? Minus बाहर ले लीजिए. So 1 minus z minus 1 to the power minus 1. Now you can expand in the power of z minus 1. And this expansion is valid for mod z minus 1 less than 1. That is, when you take the center z is equal to 1 and radius 1. So in this circle, this expansion is going to be valid, right? And this is equal to 1 minus 1 upon z minus 1, and minus, if you expand here, you will get z minus 1 to the power n, and n is equal to 0 to infinity. But all the powers are positive. All powers here are positive, right? All powers are positive. So there is no principal part because of this expansion. Everything is in the regular part. The only principal part in the neighborhood of z is equal to 1, z in the power of z minus 1 is this, right? And you see the coefficient of 1 upon z minus 1 here is minus 1 in this expansion. So therefore, the residue of the function fz at z is equal to 1 is nothing but minus 1. You can also calculate just by solving via this computational method. You multiply via z minus 1 and take the limit z tending to 1. I hope you will get this minus 1. And similarly, you can expand this series in power of z minus 2. So if you want to expand in power of z minus 2, this term is okay. But for this term, you have to expand in terms of z minus 2. So you need z minus 2 plus 1 something. You have to manipulate something and find a proper expansion
expansion in power of z minus 2, which is valid in just like here in some ring shaped region centered at the point z is equal to 2, right? And you must find the residue via this series expansion. But also, if you just use this computational technique, if you multiply by z minus 2 and take limit z is equal to 2, you can get the residue at z is equal to 2 as 1. You just take multiply by z minus 2, this will be cancelled out, and put z is equal to 2, you will get 1 upon 1. So therefore, the residue at z is equal to 2 is simply 1. Is it okay? Yes, sir. Okay. So this residue is in fact very important in calculating the integral, complex integral, and also in calculating some real integral also with the help of complex integration. So I'm not going in detail in all those matters. So if you want, you can read on your own these important results. Maybe I'm writing here, and you see its importance in calculating real and complex integrals. The first result is the Cauchy residue theorem. Cauchy residue theorem. आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इसका ये कहना है कि अगर किसी फंक्शन fz को अगर आप किसी एक मान लीजिए आप सर्किल के अलोंग या किसी भी क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं, तो कॉशी थ्योरम का स्टेटमेंट तो ये था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और डेफिनेटली 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. लेकिन अगर इसके अंदर कुछ पोल्स है, मान लीजिए सपोज इट हैज फ्यू पोल्स, z इज इक्वल टू z1, z इज इक्वल टू z2, जैसे मान लीजिए इसी फंक्शन को अगर हम एक ऐसे सर्किल के अलोंग इंटीग्रेट करें जो z इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? Then its value is not equal to 0. Then you see that this is very simple result, and it's a kind of theorem which is equal to 2 pi I times the residues of the function at different poles. इसके जितने भी पोल हैं उन सभी पोल पे इनके रेसिड्यू को सम कर लीजिए. रेसिड्यूज, सम ऑफ द रेसिड्यूज मल्टीप्लाइड बाय 2 pi I is equal to the value of integral along this closed curve. So if this closed curve containing say n poles, the pole may not be simple, they can be of any order, but you have to calculate the residues at those poles, and you just add the residues multiplied by 2 pi I to get your integral. Let us take a simple example of this residue theorem. For example, maybe suppose you want to integrate this 1 upon z dz. Let's try to find this 1 upon z dz along this circle C1, that is circle centered at the point 1, 0 and radius 1, right? So you know for this function 1 upon z, it has a singularity at z is equal to 0. But what is the residue of this function fz at z is equal to 0? इसका रेसिड्यू क्या होगा? तो इसको z से मल्टीप्लाई करिए और फिर आप लिमिट ले लीजिए, सो यू विल हैव रेसिड्यू एज सिंपली 1, राइट? और कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट्स वैल्यू इज सिंपली 2 pi I times the residue, that is 1. And you know already that the integral of this 1 upon z along this circle is 2 pi I. So this is the verification of this result. So it has lot of application. You see, you can find in several books. Whatever book you are studying, maybe through Ponuswamy book or Sarasan book or any book, you can find several questions and several even real integral which are very difficult to find its solution through real methods. It can be very easily solved through this complex integration, especially using this Cauchy residue theorem. So I'm not going in detail. Maybe after your examination, you must study, and you should study all those things, especially if you want to give the examination of especially national eligibility test or other competitive examinations. You have to do all those things. Or even if you want to do research, although in complex analysis, at least in BHU, research is not going on, but even if you want to do higher studies in complex analysis, you have to do all those things. So maybe today I stop
for this particular course, complex analysis. So हमें लगता है कि आप लोगों के सभी पेपर्स खत्म हो चुके हैं. अभी किसी का क्लास चल रहा है क्या? सर प्रोबेबिलिटी का भी बाकी है, कुछ बोल रहे थे सर लेंगे क्लास अभी. हाँ, वो हमें लगता है 1 या 2 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि बीच में वो यस क्लास सर. क्लास नहीं हम लेते. सर इस थ्योरम को जैसे ग्रेजुएशन के वे में हम लोगों का था, तो वैसे प्रूव कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा उसमें. हाँ, अच्छा, आप लोगों ने नहीं, ये बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है ये थ्योरम? यस सर, पढ़ा है. बिल्कुल सर बिल्कुल पढ़ी है, हम लोगों ने प्रूफ भी पढ़ा है इसका. कहाँ पे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है आप लोगों ने? कानपुर यूनिवर्सिटी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं है. जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मुझे पता है नहीं है, तो जहाँ नहीं है उन लोगों के लिए बताएगा. अदरवाइज 2+2 4, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े हों, चाहे वो बीएससी में पढ़िए, चाहे एमएससी में पढ़िए, कहीं पढ़िए, तो वो 2+2 अगर 4 है तो 4 होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कहीं से भी आप लाएं, मैथमेटिक्स में हमेशा 2+2 4 होता है. बस ये आप मान के चलें, वो चाहे बीएससी में पढ़े हो, चाहे एमएससी में पढ़े हो, चाहे पीएचडी में पढ़े या उसके बाद कहीं पढ़े. तो अगर ये आवश्यकता पड़ती है, तो अगर इसका प्रूफ आता है तो आप बिल्कुल कोई भी, चाहे हाई स्कूल वाला प्रूफ, चाहे ग्रेजुएशन वाला प्रूफ, चाहे पीजी वाला प्रूफ, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बस सही होना चाहिए, ध्यान देंगे. ऐसा कुछ इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है कि ग्रेजुएशन वाला है तो पीजी में नहीं लिख सकते. ठीक है. और ये चीजें इसलिए रखी हुई हैं स्पेशली, ताकि जिन यूनिवर्सिटीज में नहीं है, क्योंकि हमें हर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का ध्यान देना है, तो लोग नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो उसमें सब चीजें आती हैं. इसलिए हमने स्पेशली इसको एनालिसिस के पार्ट को रखा था, और थोड़ा बेसिक से हमने स्टार्ट करके रखा था. केवल बेसिक ही है बेसिकली इसमें, बहुत हायर चीजें इसमें हमने नहीं रखा है. स्पेशली जो नेट वगैरह के एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हमने केवल एनालिसिस में इस पार्ट को रखा है. तो ओके, अगर कोई आप लोगों को इसमें कोई समस्या होती है, तो आप लोग हमें मेल से या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और बाकी आप लोगों के 22 से एग्जाम है, आप लोग बीच में कुछ तैयारी कर लें. जो भी एक्सरसाइज हमने दिए वो आप लोग उसको जरूर कर लीजिएगा. तो 22 से आप लोगों का एग्जामिनेशन. हाँ, डेट शीट कब तक आएगी? नहीं, वो ऑलमोस्ट 22 से क्लियर है, उसमें कहीं कोई डेट, हाँ, आप लोगों को मिल जाएगा. लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो समझिए वो कंफर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो 22 से आप लोगों का डेट है एग्जाम का, और हम कोशिश करेंगे ऐसा कि वो एक दिन का गैप देकर के 22, 24, 26 और शायद पहली और तीसरी, ऐसा कुछ करके हम 5 पेपर का रखेंगे आप लोगों को. तो 22, 24, 26 3 पेपर इधर हो जाएगा. उसमें अब ये थोड़ा चेंज हम कर सकते हैं, शायद या तो मैं अपना पेपर पहले रखूंगा, क्योंकि बीच में मुझे कुछ दिन रहना नहीं है, या तो मैं अपना पेपर 22 को रखूंगा, या फिर मैं मार्च में रखूंगा. और बाकी जो है उसी में ऑर्डरिंग कुछ बदल सकती है. ऐसा नहीं कि पहला पेपर फिर दूसरा पेपर, ऐसा कुछ नहीं. कोई पेपर हो सकता है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ योर टीचर्स, क्योंकि उस दिन टीचर आप लोगों को रहे उपलब्ध, तो उसके मुताबिक हम लोग पेपर को चेंज करेंगे. बट 90% चांस है कि 22 से आप लोगों का एग्जाम होगा, और अल्टरनेट दिन हम फिक्स करेंगे. ठीक है. ओके. और कोई दिक्कत किसी को? नो सर. किसी को कोई समस्या आप लोगों को अगर होती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग डाल करके पूछ सकते हैं हमसे. कोशिश करूंगा कि मैं अगर रिजॉल्व होने लायक रहे तो रिजॉल्व कर दिया जाए. ओके, थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर.